Okay, chalo. So, as I said, in this particular chapter, we have discussed and we have already studied about the growth. ठीक है कि how, what is growth, how the growth takes place. एक मिनट ना जरा, just give me a minute. गुड आफ्टरनून मिस्टर साई प्रसाद. साई प्रसाद आ गए, लोहिता आ गई, स्नेहा आ गई, सोनल, सोनाली आ गई. चलो ठीक है. सर हमारे सोसाइटी में किसी का झगड़ा चल रहा है. अरे क्या कुछ भी श्रावणी, पागल लड़की. तू झगड़ा सुन रही है कि मेरे लेक्चर सुन रही है? मजा आ रहा है, वाह वाह वाह. अभी इधर अभी इधर देख, नहीं तो अपना झगड़ा हो जाएगा फिर. Okay, chalo. So we have discussed and we have understood about the concept of growth. Growth in case of plants. So हम लोगों ने देखा था, in case of plants, the growth is always going to be indeterminate. Indeterminate का मतलब क्या आता है? It will continue throughout life. Now, for the growth, plants will have a different type of a tissue. The tissue which is involved in the growth for the plants is the meristem. Correct? Meristematic tissue. So that helps in the growth and development. Why? Because it has an important property of cell division. इसका cell division होता है. सर आप वो डार्क, हाँ चलो ठीक है, एक मिनट ना, कोई तो भी आया वापस मीटिंग में. या okay, so basically meristem is the one which helps in the growth of the plant. Why? Because it has an important property of the cell division. इसके लिए अगर आप देखोगे तो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, तो ये सब क्या करते हैं? दे विल हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. तो हम लोगों ने क्राइटेरिया भी पढ़ लिए ग्रोथ के. ग्रोथ कैसे होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. वेदर इट्स गोइंग टू बी अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो किस तरीके से होता है, दैट आल्सो वी हैव सीन सेल डिवीजन की मदद से. राइट. अच्छा, ग्रोथ तो चल ही रहा है. साइमल्टेनियसली द प्लांट विल आल्सो शो एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज डेवलपमेंट. ओके, तो ग्रोथ के साथ साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट भी चालू रहेगा. यस वैष्णवी, यू वांट टू से समथिंग? हेलो वैष्णवी, तेरा हाथ ऊपर है, चली गई. ओके, सो बेसिकली प्लांट्स में अभी ग्रोथ कैसे होता है, रादर डेवलपमेंट कैसा होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय डेवलपमेंट? सो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. नाउ व्हेन आई से डिफरेंशिएशन मतलब क्या, this also we have seen. There is something called as differentiation, there is something called as redifferentiation and de-differentiation. रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का मीनिंग आता है व्हेन द टिश्यूज दे स्टार्ट टेकिंग अप देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके, जब ये टिश्यूज अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन, फंक्शन ले लेंगे, so that time we say that the cell is differentiated, the tissue is getting formed. Some of the cells will have a character of redifferentiation
यानी वापस, because once the differentiation takes place, the tissue or the cells will lose this ability to divide. मतलब टिश्यू या फिर सेल्स डिवाइड हो सकते नहीं है, बट लेटर ऑन अगेन इन सर्टन कंडीशन, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ में देखा गया है कि रीडिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ द सेल्स विल टेक प्लेस, मीनिंग अगेन द डिफरेंशिएटेड सेल्स विल स्टार्ट डिवाइडिंग टू डेवलप अनदर टिश्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आता है कॉर्क का, या फिर जिसको हम लोग कैम्बियम ऐसा बोलते हैं, तो ये एग्जांपल आता है। Once again, if the redifferentiation takes place, again they when they form a particular tissue, they lose the ability to divide. तो इसके लिए उसको नाम दिया है de-differentiation. Okay, so there is mechanism known as differentiation, redifferentiation, and de-differentiation. So what is development? Development is the sum total of growth and differentiation. तो इससे बनता है हमारा development. So development will include all the changes that a plant undergoes in its lifetime. जितने भी changes होते हैं, जैसे for example seed germination होता है, so there is a seed which start germinating, meaning the radical and the plumule will start developing. So plumule start developing into a stem, radical starts developing into a root, and then to the plant's death, that is senescence. Senescence का मतलब आता है old age and death of the plant. यानी जितने भी changes आते हैं, this all will be called as the development, right? Since the time the germination of the seed take place till the death of the plant or senescence of the plant. Old plants they become old and eventually they will die. So ये mechanism को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this mechanism as the development. तो ये हमारे लिए development होता है. Now there are certain sequence of events which are seen during development. कौन कौन सा सीक्वेंस क्या क्या होता है? एक मिनट, ये स्लाइड मधुरानी हाँ लिख लो लिख लो. Finished? Okay. So now what are the sequence of events? क्या क्या होता है? तो सबसे पहला तो as I said, the meristematic cells will start dividing. So mitotic cell division will take place here, and then they start forming the group of tissues. When the group of tissues are getting formed, there is another mechanism will take place that's called as cell elongation. तो सेल का साइज लेंथ बढ़ना चालू हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ना चालू हो जाएगा. वी कॉल दिस एज सेल इलोंगेशन, व्हिच इज अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल फेज दैट आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन देयर विल बी समथिंग नोन एज सेल डिफरेंशिएशन. मतलब क्या? The elongated cells will start taking up their own function. So group of cells, some of the group of cells will form a particular tissue, some of them will form another tissue, some of them will form another tissue. Like that the tissues are getting formed. But there are few cells which will remain as it is. मतलब वो meristematic cells ही रहेंगे. So they will continue to divide. So this is known as differentiation. And once the differentiation takes place, which continues for the entire lifespan of the plant, and eventually the plant becomes old and then the plant will die. जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में एक टिपिकल फेज आता है, वी हैव अ फीटल एज व्हेन वी आर इनसाइड द मदर्स होम, देन देयर इज इन्फेंसी, इन्फेंसी इज फॉलोड बाय चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज फॉलोड बाय एडोलेसेंस, टीनेज जिसको हम बोलते हैं हम लोग, द वन व्हिच यू आर इन. उसके बाद आता है एडल्टहुड, एडल्टहुड के बाद आता है ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद आता है डेथ. सिमिलर सीक्वेंस में यहाँ पे प्लांट्स में ये होगा. थोड़ा फर्क रहेगा बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. सो दिस आर ऑल द सीक्वेंसेस व्हिच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. यहां तक ठीक? चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ ये पूरा मैकेनिज्म दिया देखो, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल अंडरगो सेल डिवीजन, करेक्ट? तो सेल डिवीजन होने के बाद दे विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. व्हेन दे डिफरेंशिएट दे विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ टिपिकल टिश्यू, तो मैच्योर सेल बन जाएगा. Sometimes the redifferentiation can also takes place. So there will be elongation, maturation, eventually the mature cell will be formed. And then again there will be senescence, senescence leading to the death of a person. So here in this phase, जब meristematic cells divide होता है ना, that time the growth is going to be arithmetic. Okay? No, don't draw this typically. Wait दिया, एक बार पढ़ लेते हैं. So the growth is going to be arithmetic, but when this particular takes place, that is expansion and elongation, that time the growth is going to be geometric. So differentiation के time पे it's going to have arithmetic growth, and expansion के time पे it's going to have geometric growth.
करेक्ट? इफ यू रिमेंबर अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, देयर आर टू सेल्स विच आर फॉर्म, वन विल डिफरेंशिएट, वन विल डिवाइड. बराबर है? यस और नो? यस. तो दैट इज हाउ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल टेक प्लेस. ज्योमेट्रिक में क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में both divide. Very good. And all daughter cells will start dividing. यहाँ पे दो ही डिवाइड, एक डिवाइड होता है, एक मैच्योर होता है. यहाँ पे सारे डिवाइड होना चालू हो जाएंगे and then develop into a entire mass. So geometric growth is going to be rapid as compared to arithmetic growth. So this is what we have observed when we discussed about the growth. Okay. प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मीनिंग आता है प्लास्टिसिटी. वो आगे आएगा कॉन्सेप्ट, मैं आपको बोलता हूँ. ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या होता है, इसको ड्रॉ लिख के रखो बेटर. दिस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन. लास्ट स्लाइड ये वाला. सेनेसेंस का मतलब इशिता ओल्ड एज, बूढ़े हो जाते सब. फिनिश्ड? Yes, sir. हो गया ये लिख के? Done, sir. ओके. हाँ इशिता लिख लिख लिख. सानिका घुड़के. फिनिश्ड? सो गए क्या सब लोग? Done, sir. ओके. Okay, chalo. Plants will exhibit this important characteristic known as plasticity. Now, what do we mean by this? It is the ability of the plant to form different structures. ठीक है, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, द एनवायरमेंट. तो उसके हिसाब से प्लांट्स है ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना चालू कर देते हैं. एंड द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. चेंजिंग एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. प्लस ऑल्सो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. मतलब जब यंग एज में रहते हैं प्लांट्स, उस टाइम पे जो ग्रोथ होता है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो अलग रहेंगे. व्हेन दे बिकम एडल्ट, स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. व्हेन दे बिकम ओल्ड, स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. कुछ कुछ प्लांट्स में होता है, नॉट इन ऑल. लेकिन आपने ओवरऑल देखा होगा, ठीक है, कि प्लांट्स विल डेफिनेटली एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ एबिलिटी, दैट इज ability to form different structures in response to environment and different phases of life. तो इसके हिसाब से बनते, जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोफाइली इन लार्क्सपर. अभी देखो आप, लार्क्सपर ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट वाटर हैबिटेट, यानी अगर ये पानी में रहेगा तो ये ऐसे दिखता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इट इज सीन लाइक दिस. जुवेनाइल मतलब यंग एज में जब रहता है, सो दैट टाइम द लीफ अपीयर्स लाइक दिस. व्हेन द सेम लीफ बिकम्स एडल्ट, इट अपीयर्स कंप्लीटली डिफरेंट. ये साइले एक मिनट. वेट वेट श्रुति. तो ये एग्जाम्पल है हेट्रोफाइली इन केस ऑफ लार्क्सपर. ओके, तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल आता है. यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? हाँ, कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला. Okay, done, sir. हाँ सर इसके पहले वाला भी दिखाओ ना. ये वाला हो गया.
हाँ सर। ओके चलो हो गया, ये हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ओके दिस इज एग्जांपल हेटेरोफाइली इन केस ऑफ लार्कस्पर नाम का एक प्लांट है, तो उसमें आपको ये अलग अलग टाइप के लीव्स मिलेंगे। पानी में रहेगा तो उसका सेम स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएगा। जुवेनाइल मतलब यंग रहता तो लीफ विल बी डिफरेंट, व्हेन इट बिकम्स एडल्ट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में द लीव्स आर लाइक दिस, मतलब ये जुवेनाइल टू एडल्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपको इस तरीके से मिलेगा। So that is according to the environment and according to the phases of life, the structures can be different. तो बहुत सारे plants में आपको ये मिलता है, ठीक है। That the structures will be different when they are young, structures become different when they become old, including leaves, flower, bird, stem, हर एक का ऐसा आपको changes मिलेंगे। Now, what are the hormonal factors affecting the plant growth and development? क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? We are here talking about the process of growth, बराबर है। जैसे एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में फॉर द ग्रोथ वी रिक्वायर व्हाट? हार्मोन्स। प्लांट्स को भी उनके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स विल आल्सो रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ द टिपिकल हार्मोन्स। The hormones which are present in the animals and human beings are completely different. These are known as plant hormones, which are also called as the phytohormone. Phyto matlab plant, or they are also known as plant growth regulators. ठीक है, तो शायद कुछ लोगों को पता रहेगा, सीबीएसई में आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में ये था। सो नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। और इसका फंक्शन क्या रहेगा? इसका काम क्या रहेगा? क्योंकि हार्मोन है तो हार्मोन विल बी यूजफुल फॉर व्हाट? The overall growth and development. Yes, correct. So it stimulates the growth. Correct, Nishita. So it stimulates the growth in a particular plant. तो ये क्या करेगा? ये सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, ये सारे मैकेनिज्म्स को स्टिमुलेट करते रहेगा, ठीक है। So that is how it is seen. So these compounds they promote, inhibit and control the growth and physiological function. Now when I say physiological function, meaning what? Physiological का meaning आता है normal functions, normal expected functions of the body. They are all under the control of this particular hormones. तो हम लोगों को अभी डेवलपमेंट में मेनली क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट में we will have to understand the different types of hormones. तो ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले ये लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। लास्ट स्लाइड ही है ना ये वैष्णवी? कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए तेरे को? ये इसमें क्या है वैष्णवी? चलो ये लिख लो। हो गया? नहीं, इनको पूछ रहा हूँ। मैंने आप सबको पूछा हो गया, तो इधर सर ने मुझे, एक सर ने मुझे बताया हाँ सर। फिनिश्ड? नो सर, नो सर। हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। पूरे हार्मोन्स पढ़ने हैं हम लोगों को, प्लांट्स के फाइटो हार्मोन्स। हाँ, सर। तू तेरा काम कर अमन। आपने इनका नहीं लिया है ना ऑनलाइन? नहीं लिया ना? 11th ऑनलाइन नहीं लिया ना? नहीं, ये नासिक वालों का होता होता है। वो इसमें एक ही दिन देता है। देन चलो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन? क्या काम करते हैं प्लांट हार्मोन? सबसे पहला, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सेम जैसा ह्यूमन बींग्स में होता है वैसा ही यहाँ पे होता है। अमन तो मैसेज टाइप करता है ना, उसमें टाइम पास होता है, उससे अच्छा है कि तू लिख ना। हाँ, और बाद में लास्ट लाइट चिल्लाते रहता है। हाँ, या हो गया तो धो क्या फिर?
Okay. So basically, characteristics of hormones में, plant hormones में we have the hormones. Now these are hormones which are required in very small quantities. Same जैसे human beings में भी ऐसे ही होता है, hormones are required in very small quantities. Then they will be synthesized in the apices of. अभी apices पे ही क्यों होता है? Apices का मतलब आता है apex region, मतलब tip region, because that is the region from where the growth will take place, ना? So usually hormones will be released more in the meristematic tissue than in the permanent tissue. And meristematic tissue is like apical meristem, intercalary meristem or lateral meristem. तो apical meristem में ये सबसे ज़्यादा release होता है. So where it is released? So it is released at the apices of the stem, apices of the root. तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा. Get in this? So they will be released at the apex of the stem and the roots. Okay, so that is how this particular hormone will be released. एक मिनट students, सागर लंके सर आए हैं, उनको पैनलिस्ट में भेज देता हूं मैं. ओके, गए. फाइन, चलो. So they are always required in a very small quantity. Plus they will be synthesized in the apices of the stem and root. लीफ में भी मिलता है, लेकिन लीफ का जो पेटियोल होता है ना, वहां पे आपको मिलेगा. अपाइसेस ऑफ द लीफ नहीं लिख सकते, पेटियोल ऑफ द लीफ, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको छोटा सा डंडी, सो वहां पे ये मिलेगा आपको. ठीक है. Then they are genetically controlled. Naturally, any hormone in our body is controlled by the genes. Hormones in our body are secreted by the glands. So these glands are controlled by the genes. Similarly, यहाँ पे भी वही होता है. But the only difference is, in this case, in case of plants, there are no glands which are present for secretion of hormone. Instead, it is secreted by the cells itself. Okay, and they are naturally genetically controlled, and they are also influenced by the environment. Now when I say influenced by the environment, meaning what? With the change in environment, the hormonal quantity and quality might change. ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, we will discuss at the time when we are going to discuss all these different types of hormone. ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक कैरेक्टर है कि it can get influenced by the environment in a good way or in a bad way, which can be useful for the plants, which may not be useful for the plants. And single hormone will always have many functions. So हर एक हार्मोन का अपना एक प्राइमरी फंक्शन रहेगा, उसके बाद उसके सारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज वन हार्मोन नोन एज ऑक्सिन. ठीक है, तो ऑक्सिन या हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन. करेक्ट. और जब सेल इलोंगेशन होता है तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द टिप. So that is the primary function. उसके साथ उसके other भी function है. जैसे for example, it prevents abscission in young age and promotes abscission during old age. Abscission मतलब falling of the leaves, falling of the fruit, etc. तो वो falling का जो mechanism है, that is prevented during young age in the plants and supported or rather done with the help of this hormone. तो मतलब हर एक हार्मोन का एक प्राइमरी फंक्शन, एक रहेगा सेकेंडरी फंक्शन. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सी द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द हार्मोन्स. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? तो सबसे पहला, देयर आर 5 नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सबसे पहला जो आता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सिन्स. उसके बाद द सेकंड वन इज नोन एज द गिबरलिन्स. The third one is known as cytokinins. The fourth one is ethylene, and the last one, the fifth one, is known as the abscisic acid. उसमें से इथाइलिन इज वन हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. गैसियस हार्मोन ऐसे बोला गया है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. राइट. बाकी सारे केमिकल्स ही है, तो वो रूट्स में भी रहेंगे, स्टेम में भी रहेंगे, लीव्स में भी रहेंगे, फ्रूट्स में भी रहेंगे, फ्लावर्स में भी रहेंगे. एवरीवेयर दिस हार्मोन्स विल बी प्रेजेंट. यस, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स वगैरह उसके लिए काम में आता है इथाइलिन. करेक्ट आदित्य. ओके, सो दीस आर द 5 नेचुरल हार्मोन्स. Yes, a cage, right. It is like a cage मतलब A, जो मुझे किसने बताया? सानिका ने बताया, सानिका वालिन. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, गिबरलिन्स एंड इथाइलिन. बराबर है ना? So you can remember this as a cage. ऐसे पिंजरा. Good, सानिका, thank you.
ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सिन्स. ठीक है, सो ऑक्सिन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ना. ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइन्स, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर. Okay, the one which promotes the growth, whereas ethylene is considered as both promoter as well as inhibitor, but most of the time it is inhibitor in nature. Inhibit का मतलब आता है to stop या फिर कंट्रोल, तो वो कंट्रोल करने का काम करेगा. एंड एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. ठीक है, द वन विच हेल्प्स इन एब्सेशन. एब्सेशन का मीनिंग आता है फॉलिंग ऑफ द फ्रूट, फॉलिंग ऑफ द लीव्स, फॉलिंग ऑफ द फ्लावर. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड. ठीक है, तो इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर. राइट, ये कैरेक्टर्स पहले लिख लो. डिफरेंशिएशन है तीनों पांचों हार्मोन में. फिनिश्ड. Okay, good. Now there are certain plant hormones and their derivatives. Derivatives मतलब in what form they are available in the plant. So जैसे for example we have the first hormone auxin which is available as indole compound, IAA, indole acetic acid, and IBA, indole butyric acid. ऐसा, तो ये फॉर्म में अवेलेबल रहता है. Gibberellins are available in the form of terpene. Then we have cytokines which are available as adenine. Okay, for derivative is adenine. Ethylene का derivative is hydrocarbon, which is a gaseous form, and abscisic acid का रहता है carotenoids. So these are all the derivatives of the 5 important hormones. These are the one where the plants will see these hormones in this form. ठीक है, तो ये फॉर्म्स है इनके. So we call them as the derivatives, जिससे ये hormones बनते हैं. Okay, just write this down. I'm coming in 1 minute.
ओके, आगे आ गया मैं। अच्छा, कोई तो भी मुझे पूछ रहा था व्हाट इज, अरे टर्पिन यानी वो ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर टर्पिन। ऑयल्स होते हैं ना, प्लांट ऑयल, सो दैट इज दैट टर्पिन। सर व्हाट इज इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड is IAA and IBA, which are the derivatives, indole derivatives of oxins. And terpene is saturated hydrocarbon. Sorry, terpene is basically a type of unsaturated hydrocarbon. Okay, oils में होता है, oils, plant oil जो होते हैं ना, so they contain this. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. We'll start with the first one, and that first one is known as the auxins. अभी auxins क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया, they are considered as the growth promoter, the one which helps in the growth of the plant. Okay, so most common type of naturally occurring growth hormone in the plant, and this one is the hormone which is found in the tip of the stem and the root, and tip of the stem and root is responsible for the growth of the plant, right? So that is why this hormone becomes very important. It is basically a type of weak organic acid and promotes the cell elongation during growth of the stem and root. As I said ना, मैंने पहले बताया था, देखो cell elongation मतलब cell लंबा होता है. Do you remember cell division is one character जो हम लोगों ने पढ़ा था. सेल डिवीजन के बाद सेल इलोंगेशन आता है. अच्छा, सेल डिवीजन कौन करता है? तो उसको प्रमोट करने के लिए वी हैव वन मोर हार्मोन नोन एज साइटोकाइन्स और साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन प्रमोट्स द सेल डिवीजन, तो वो प्लांट में सेल डिवीजन लेकर आता है. वेयर एज ऑक्सिन्स विल हेल्प इन सेल इलोंगेशन, सेल्स को लंबा करने में, इलोंगेट करने में काम में आएगा. दैट इज ऑक्सिन्स, राइट? सो हेडिंग दो ऑक्सिन्स का एंड जस्ट राइट डाउन दिस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन. होने के बाद बोलो कि हो गया सर. Finished? Okay. Yeah. So these are the preliminary characters of the auxins. Now, discovery of auxins may this was for the first time understood by this scientist, that is Charles Darwin and his son. तो ये दोनों ने मिलकर, फ्रांसिस नाम था उनका, तो ये दोनों ने मिलकर दे स्टडीड द बेंडिंग और कर्वेचर ऑफ द कैनरी ग्रास कोलोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट. ओके, so this is a normal canary coloptile, and then it is bending with the in the direction of the sunlight. So light is falling from this direction, and they observed that this particular coloptile started bending in the direction of sunlight like this. So this was studied by these two people, that is Charles Darwin and his son Francis. तो दोनों ने इसका स्टडी करना चालू किया. Now what they did was they cut the tip of the coloptile. When they cut the tip of the coloptile, and when this stem which has the cut tip of the coloptile got exposed to the light, it was observed that there is no curvature. थोड़ा पहले देख लो, बाद में मैं स्लाइड दिखाता हूँ. There is no curvature seen. So what they concluded that there is something which is present in the tip of the coloptile. ठीक है. अभी दूसरे साइंटिस्ट है FW वेंट, अभी इन्होंने भी सेम किया. They observed the coloptile and they found that when this coloptile, yes, एक मिनट रुको सानिका, this coloptile gets exposed to the light from any one side, then the auxin, some chemicals are present at the tip, they start moving towards the shady region. तो
तो ये वाला लाइट का, ये लाइट का एक्सपोज रीजन है, ये वाला शेडी रीजन है। तो सारे जो केमिकल्स है वो चले जाते हैं शेडी रीजन्स के अंदर, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सेल्स विल बी मोर। तो इनका सेल इलोंगेशन ज्यादा होता है, इनका सेल इलोंगेशन कम होता है, एंड देन इट स्टार्ट्स बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये वेंट ने ऑब्जर्व किया। सो व्हाट ही सेड दैट सम अनआइडेंटिफाइड केमिकल्स कॉज दिस कर्वेचर। कुछ तो है ऐसे केमिकल्स जिसकी वजह से ये कर्वेचर होता है। Yes, so the chemical is basically present at the tip. And what was that chemical? He named that chemical as oxin. So in 1928, he gave the experimental proof for the presence of these chemicals, which he called as the oxins. Okay, and then he did this particular test that's called as Avena sativa or Avena curvature test. अब ये टेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे डिस्कवरी हुआ, मतलब डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने बेंडिंग तो देखा था। He observed that the stem starts bending in the direction of the light, but he did not know कि ये क्यों होता है। तो ये किसने स्टडी किया? तो ये स्टडी किया वेंट ने। चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था कि टिप को अगर हम लोग कट कर देंगे स्टेम के तो वो बेंड होता नहीं है, लेकिन अगर टिप को वैसा ही रखोगे तो इट स्टार्ट्स बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो वेंट ने क्या किया? वेंट ने उसको थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी किया, एंड ही सेड दैट देयर आर सम केमिकल्स व्हिच गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर through the shady region, because of which the cell elongation will be more in the region opposite to the light, and thus the bending of the stem will take place. तो ये वेंट का डिस्कवरी है, और इसी केमिकल को बाद में वेंट ने नाम दिया ऑक्सेन्स। ओके, चलो, तो यहां तक अभी आप लोगों को लिखना है, तो कहां से शुरुआत करूं, बोलो। दिस इज फर्स्ट साइड डिस्कवरी, ये हो गया। No, sir. No, sir. लिखो। Finished? Khushi, the chemical is oxin. Done, sir. हो गया, चलो आगे। डायरेक्ट ये No, लिखो। sir. हाँ, क्या चाहिए? Sir, वही स्लाइड पे ही थी। ये वाला। Done, sir. हम्म, कौन से टेस्ट का दूसरा नाम? एवेना कर्वेचर टेस्ट। आपने डायग्राम निकाल के रखा तो भी चलेगा। हाँ, Done, sir. ओके। यही नाम है अमन उसका, एवेना कर्वेचर टेस्ट।
फिनिश्ड? चलो आगे बढ़े। Done, sir. ओके, तो अभी ये कर्वेचर टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। नाउ द आइसोलेटेड ऑक्सिन, अभी क्या किया ना, व्हाट ही डिड वाज ही आइसोलेटेड द ऑक्सिन फ्रॉम द कोलेप्टाइल टिप ऑफ द ओट. Now he said and he observed that there is some chemical present at the tip of the avena sativa. तो अब ये एक्सपेरिमेंट को उसने कैसे किया, तो इसने क्या किया, he separated or isolated this particular auxin from the coleoptile of the tip. Okay, so what was this compound? So this compound was indole 3 acetic acid. Do you remember IAA and IBA? मैंने बताया IBA was discovered later. This one is the one which is used by Wendt. तो वेंट ने इसको यूज किया, दैट वाज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. इसको पहले उसने सेपरेट किया. देन व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली पुट दिस पर्टिकुलर, तो सबसे पहला तो उसने ही कट द टिप ऑफ द एवेना कोलोप्टाइल. ओके, एवेना का कोलोप्टाइल था ना कटी, उसको बेसिकली उसने कट किया टिप ऑफ द कोलोप्टाइल. आफ्टर कटिंग द टिप, अभी टिप निकाल दिया, इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब the oxygen which is present at the tip is now removed. Now this part which has this tip was now kept on the agar block for some time. तो इसकी वजह से क्या हुआ, the indole 3 acetic acid got released into this agar gel. तो वो agar gel ने उसको absorb कर लिया. Fine. उसके बाद he placed this particular agar block asymmetrically on cut coleoptile stumps. ओके, तो ये कोलोप्टाइल का ये जो कट रीजन था, दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड एज द कट कोलोप्टाइल स्टम्प. तो उसके ऊपर उसको एसिमेट्रिकली, यानी आधा थोड़ा सा एक्सपोज आधा नहीं, इस तरीके से उसको रख दिया. अब ये अगार के अंदर क्या है, दिस अगार हैज द ऑक्सिन, इसके अंदर ऑक्सिन है. अभी इसको रख दिया, जैसे इसको रखेंगे व्हाट विल हैपन दैट ऑल द कोलोप्टाइल शोड टिपिकल कर्वेचर इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. इसको, ये स्टेम को उसने लाइट के साथ एक्सपोज नहीं किया. So what happened, the oxygen which is present in this agar got released into this plant body and eventually it started changing its direction. तो ये अपने आप डायरेक्शन चेंज होना चालू हुआ, though it was not exposed to the light. मतलब अभी यहाँ पे ये जो कर्वेचर आने लगा, ये कर्वेचर किसकी वजह से आया, तो ये कर्वेचर आया बिकॉज ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड IAA एक्सेस. ये वाले सेल्स में इधर तो रहेगा ही, लेकिन ये अगार की वजह से इट इज इन एक्सेस, यहाँ पे ये ज्यादा हो गया, बिकॉज इट इज मोर, सो यहाँ पे सेल इलोंगेशन ज्यादा होता है, और अगर यहाँ पे सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा सो नेचुरली इट स्टार्ट्स बेंडिंग, तो स्टार्टेड बेंडिंग. So what was the conclusion? तो इसमें से conclusion ये आया that some substance diffused from the cut tip into the agar block, जो diffuse हो गया agar block में चला गया, this substance they cause the curvature. And what is the name of the substance? The substance is called as the auxin. समझ में आया experiment? Yes, good. तो this is how the experiment is done. ओके, सब लोगों को समझा? हेलो, हाँ, चलो अब इसको लिखना है ना आप लोगों को, तो आई एम जस्ट गोइंग बिहाइंड. लिखो इसको अभी.
Sir, if the plant is in light, will the plant form curve after cutting the tip? No, it won't ना, क्योंकि टिप कट कर दिया मतलब आपने क्या किया, यू हैव रिमूव दी ऑक्सिन, राइट? तो ऑक्सिन अगर चला गया तो नेचुरली फिर वो कर्वेचर नहीं मिलेगा आपको. दिस इज द लास्ट स्लाइड. आनंद, यू वांट दिस? ओके, सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. खुशी समझा? जो किसने ऑब्जर्व किया था, आप जो बोल रहे हो किसने ऑब्जर्व किया था? इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय चार्ल्स डार्विन. नहीं, इसका मतलब श्रावणी लाइट का रोल है. वो कैसा है वो अभी मैं आपको बोलता हूं. ओके, हाउ दैट लाइट इज इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैकेनिज्म. बिकॉज ऑक्सिन्स आर खुशी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. हाइट बढ़ाने में काम में आते हैं ना, इसके लिए दे आर प्रेजेंट ओनली इन द रीजन वेयर दे आर यूजफुल. ओके, सो मेजर उसका जो ये रहता है रोल, दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट ना. तो मेजर क्वांटिटी विल बी प्रेजेंट इन द टिप, क्योंकि वहीं से हाइट बढ़ता है इसके लिए. ठीक है, डन. ओके, सो हाउ डज कर्वेचर अकर ड्यू टू ऑक्सिन. अभी ऑक्सिन की वजह से कर्वेचर क्यों होता है? जैसे अभी नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेन विच इज गेटिंग एक्सपोज टू द लाइट. अभी लाइट यहां से आ रहा है, बराबर है. सो दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला जो प्लांट का रीजन होता है ना, दिस वन, जो वन विच आई हैव ड्रॉन हियर, नाउ बिकम्स अ शेडी रीजन. यानी यहाँ पे लाइट नहीं गिर रहा है, सिर्फ ये वाले रीजन पे गिर रहा है. मतलब दीज सेल्स आर गेटिंग एक्सपोज टू द लाइट. Because of excess exposure to the light, the oxygen from the light region gets diffused to the shady region. So the light causes destruction or inactivation of auxins. So auxins move on the other side. Light की वजह से auxin destroy हो सकते हैं, which plant doesn't want, because plant requires auxin for its growth and development. That is why there is natural tendency that the auxins from this region will start getting diffused to the cells of the shady region. तो जो shady region में cells है वहां पे ये चले जाते हैं, and because of that the elongation of the cells in this region will be more. और यहाँ पे elongation ज्यादा है और इधर का elongation comparatively कम है. So naturally it starts bending like this. So we feel that it is now bending in the direction of light. Okay, so light basically helps in this entire mechanism. So cells on the dark side will elongate and elongate more, causing the curvature. As you can see here, ये वाले जो cells है वो ज्यादा elongated है, ये वाले cells normal है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाले cells में ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन एकदम कम है. Because that's called as denaturing of the enzyme, denaturing of the hormone, because it is protein in nature, na? So it cannot withstand that light and temperature sensitivity. So that is why it gets denatured, destroyed. So that is also another important character of this. Okay, so the proteins which are present here will get denatured because of exposure to light and temperature. हाँ, अगर लाइट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना. सपोज अगर लाइट ये डायरेक्शन में आएगा तो व्हाट विल हैपन? चलो एक काम करते हैं, आई जस्ट ऐड वन मोर स्लाइड हियर.
So suppose now let's take an example. We have a stem here. Okay, अब ये stem is getting exposed to light in this direction, so naturally this stem will start bending like this. Okay, now no, photoperiodism is different. Phototropism, हाँ बराबर, phototropism can be called this as, sorry, I thought you are saying photoperiodism. Suppose light is getting plant is getting exposed to light from this direction, so what will happen? The stem will start moving in this direction. But if this particular stem gets exposed to light from all the directions, या फिर ऊपर के direction से expose होगा, तो naturally auxins will be more diffused in the lower region than the upper region, so the stem starts growing like this. तो वो straight grow होना चालू हो जाएगा. ठीक है, so this is movement of the stem or the plant body in the direction of sunlight, but this movement is basically caused by diffusion of auxins sorry, auxins in the cells of shady region of stem, जिसकी वजह से क्या होता है? The cells which are present here in this region will elongate more as compared to the cells which are present in this opposite region. सबको समझ में आ रहा है? Yes. Hello. Are you all getting? Yeah. Good. थर्ड केस में क्या होगा संजीवनी? क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं ना कि किस तरीके से प्लांट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रोथ सिर्फ इरेक्ट ही होता है. तो सपोज इफ दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, ओके, एंड द लाइट इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, ऊपर से ही लाइट आ रहा है, ना साइड से, ना ये साइड से, ना वो साइड से, सीधा ऊपर से आ रहा है. सो नेचुरली द ऑक्सीजन व्हिच आर प्रेजेंट हियर इन दिस रीजन विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, नीचे चले जाएंगे. सो यहाँ पे सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा, लेकिन वो बेंड करेगा क्या? सारे सेल्स का इलोंगेशन इक्वली होगा, सो इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस. तो ये ऊपर मूव होना चालू हो जाता है लाइक दिस. आर यू गेटिंग दिस? या लाइक कोकोनट ट्री में भी. Then sir, why plant stop growing when it doesn't get light? मतलब अच्छा, light is also necessary for what, खुशी? So bending is not happening Sanjeevani here, it is just going straight because all the cells are getting elongated. यहाँ के सारे cells एक साथ elongate हो रहे हैं, किसी एक साइड का elongate नहीं हो रहा है ना, सारे हो रहे हैं. Okay, growth is because of what, खुशी? ग्रोथ कैसे पॉसिबल होगा? हाउ कैन यू ग्रो एंड हाउ कैन वी ऑल ग्रो? हमारा ग्रोथ कैसे होता है? बिकॉज वी हॉर्मोन्स एंड, और क्या? हॉर्मोन्स के अलावा और कुछ नहीं है ग्रोथ के लिए चाहिए? न्यूट्रिएंट्स. वेरी गुड, हॉर्मोन्स एंड द फूड ना. व्हाट इज द फूड फॉर प्लांट्स, खुशी? व्हाट इज द फूड फॉर प्लांट? नहीं, व्हाट इज द फूड फॉर प्लांट? वाटर, सॉइल और लाइट से क्या करता है प्लांट? फोटोसिंथेसिस. हाँ, फोटोसिंथेसिस. तो अगर लाइट अगर नहीं रहेगा खुशी, तो विल देयर बी ए फोटोसिंथेसिस? नहीं. और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो हार्मोन कितने भी हो, ग्रोथ हो पाएगा क्या? खुशी, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. So we are learning one of the factor responsible for the growth, not the only factor, right? समझ में आया सबको ये? क्या नो? नहीं समझा? हाँ समझा. ओके, चलो, गुड, फाइन. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीजन. ये लिखा गया आपने? ये लिखा है आपने? नो सर. हाँ लिख लो, लिख लो. डायग्राम भी निकाल के रखो. हाँ,
Very important for you to draw the diagram. Done? लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए श्रावणी? Done? Okay. Finished. चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग की किस तरीके से ये काम करता है। ओके, गुड। ना अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब हो गए ऑक्सीजन के। नाउ दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका रोल क्या है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। So oxygen is basically a most common type of naturally occurring growth hormone. ठीक है, ये शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। हाँ, अभी यहां से पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल, इसका काम क्या होता है, एप्लीकेशन, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन भले ही करता है लेकिन इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता है जितना सेल इलोंगेशन को ये प्रमोट करता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रोल। सेकंड, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कैलस इन टिश्यू कल्चर। अभी टिश्यू कल्चर क्या है दैट वी नो। अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, कैलस। फिर अगेन कैलस कैसे बनेगा, कैलस विल बी फॉर्म बाय द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। ठीक है, सो टिश्यू कल्चर इज बेसिकली अ टेक्निक वेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन एंड देन इट इज एक्सपोज्ड टू वेरियस हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स सो दैट इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ एंटायर न्यू प्लांट। तो इनिशियल ग्रोथ जो पेट्री डिश में होता है of that structure is known as the callus formation, and callus formation is because of auxins. ठीक है, so tissue culture technique is used to grow plants in plant cells in a nutrient medium. ठीक है, so जैसे for example this is a particular fruit or a vegetable we have and I want to develop a new plant. So what I will do is that I'll take a very small piece of this particular structure, ठीक है, and then offer this particular plant cell and then I will expose this particular cell in the nutrient medium. Now this nutrient medium contains what, this nutrient medium will also have the auxins, other hormones will also be there, cytokines bhi rahega, cytokinin, auxin bhi rahega, and plus nutrients. When this cell is exposed to the nutrient, it starts developing into a multicellular mass called as the callus. Callus will have many nodes and internodes.
so that then it starts differentiating and starts developing into a entire small plantlet. ठीक है, सैपलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा प्लांटलेट बनना चालू हो जाएगा, सैपलिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा बनेगा, एंड देन इट विल डेवलप इनटू अ एडल्ट प्लांट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो कैलस फॉर्मेशन होता है, तो ये कैलस फॉर्मेशन में यहाँ पे बीच में हम लोग क्या रखेंगे? वी आर गोइंग टू कीप दी ऑक्सिन्स, वी आर गोइंग टू पुट साइटोकाइनिन्स because it helps in cell division plus nutrients. Okay, so these are all the things which are present within the petri dish. टिश्यू कल्चर समझ में आ रहा है? ये आप Yes. लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट गया, ज्यादा स्लो नहीं पढ़ा है मैंने इसको, बट आई होप एवरीवन नोज अबाउट दिस। ठीक है, इसको एक डायग्राम फॉर्म में आपने निकाल के रखा, आपके बुक में तो भी चलेगा। पहला कोई स्लाइड चाहिए क्या किसी को? आलोक को चाहिए। ठीक है आलोक, यही वाला ना? अभी ये लिख लो, ये ड्रॉ कर लो अच्छे से। फिनिश? अचानक मैं मीटिंग से चला गया था, पता नहीं क्यों। फिनिश्ड? डन? चलो नेक्स्ट वन, another role of auxin helps in formation of adventitious roots in cutting. क्या नो आनंद? हो गया? फिनिश्ड? Okay. Okay. Next role of this auxins is basically it helps in formation of the adventitious roots in the cutting. Cutting मतलब क्या है? It's a type of process by which the new plant can be grown. So stem cutting is done here. तो हमने क्या किया, किसी एक प्लांट को स्टेम हमने कट कर दिया which has some nodes, एक या दो nodes होते हैं, and this stem is now exposed to the auxin block. Okay, so when it gets exposed to the auxin block, this stem will start developing the root. तो यहाँ पे adventitious roots बनना चालू हो जाएंगे, and then this particular plant will be sown in the soil.
So it plays an important role in the vegetative propagation, matlab reproduction in the plant without the use of gametes. So it's a type of asexual reproduction. Okay, so this helps in development of a new plant. So stem cutting का भी मैकेनिज्म होता है, तो उसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आपने डायरेक्ट स्टेम भी सॉइल में डाल दिया तो भी रूट्स डेवलप होगा. If the same stem base is exposed to the oxygen block, it will again develop into the roots and then it can be put in the soil for the further growth and development. Okay, so this is another role of the oxygen. Please write this down. Finished? Hello. Yes, sir. Okay, sure. So this is another role. Then application of auxins in the root initiation in the tissue culture. So tissue culture में भी root initiation में काम में आएगा. अरे इधर ये ग्रुप इसमें मीटिंग में नासिक के बच्चे नहीं है, ओनली औरंगाबाद स्टूडेंट्स आर देयर. So you can come in the next lecture, 4:30 to 6:30. Okay. Tejaswini, I hope you have heard this. So basically, it helps in root initiation in tissue culture. Okay, tissue culture में root initiation में काम में आता है. कैसे? When, जैसे for example, we will put this callus in the test tube, which contains the necessary medium or the necessary nutrients, जिसमें oxygen भी रहेगा. So as you can see here, the callus is getting exposed to oxygen present in this medium, and then it is developing the roots. तो यहाँ पे callus को roots आना चालू हो जाएंगे. Then this entire callus can be put in the soil. इसको हम लोग soil में भी इस तरीके से डाल सकते हैं. Okay. So inside of the soil, then it starts developing into the typical plant body. पूरा plant body तैयार होना चालू हो जाएगा. So this is another application of the auxins. Finished? Okay. Next, auxins promotes the flowering in pineapple. Pineapple में specific function इसका, it helps in the flowering mechanism. Sir, so the root tip is put in the test tube, right? The entire callus is put in the test tube, Aditya. Callus is just the irregular structure which is formed like this, which has many nodes and internodes. So that is put in the test tube which contains the auxin. Okay, Aditya? Yes. Chalo, next function is it promotes the flowering of the pineapple. Pineapple में specifically flowering का मतलब क्या आता है? Blooming of the flower, growth and development and blooming of the flower. तो इसके लिए auxins are useful. Okay, ठीक है? Now you must have seen, अभी ये थोड़ा सा आप लोगों ने भी देखा होगा, we have this bushy growth. Bushy growth मतलब क्या? The growth is more in this direction. ऐसा growth हो रहा है, lateral growth मतलब फैल रहा है. And some plants will have the vertical growth. ठीक है, तो ऐसा vertical growth होता है. Now, in any plant, if the growth has to take possible only when, hello, can you hear me? Yes, sir. So growth is possible in the plants only. जैसे ये वाला bushy growth हो रहा है, मतलब horizontal growth हो रहा है. This plant is growing vertically. So it is possible only when something is present at the tip of the stem. So basically for this type of growth, we have two important structures known as the buds. Okay. Jaise for example, we have two different types of buds. One is known as the apical bud.
स्टेम के टिप में एक बर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपाइकल बर्ड, और स्टेम के आजू बाजू में बर्ड्स होते हैं, साइड में बर्ड्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल बर्ड. माय पीपीटी इज लैगिंग. हेलो. No, sir. No, sir. Okay. It was, and now it is not. Okay, fine. Chalo. So basically, we have two different types of birds. One is known as the apical bird, and the other one is known as the lateral bird. So what auxin does is, auxin will help in apical dominance. मतलब क्या? It makes the apical bird more active. So suppose we have this stem here like this, and this stem has the bud here in this region. Apex region में एक bud है इधर, और इसका ये lateral side में भी bud है. So this particular bud will be made active, so that the plant will start growing in the upward direction like this. तो प्लांट ऐसे वर्टिकली ग्रो होना चालू हो जाता है. वी कॉल दिस एज अपाइकल डोमिनेंस. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट. कौन सा प्रीवियस स्लाइड चाहिए श्रुति आपको? इसके पहले वाला. ये इसमें क्या है? नहीं, इसके भी पहले वाला. ये नहीं सर. ये तुम सो रही है? नहीं, वो एवरी प्लांट हैज टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वो वाला. वो आगे है, ये वाला.
हाँ यही वाला। ये वाला स्लाइड पहले लिखो, बाद में वो पीछे वाला लिखना है। हो गया। अपाइकल का मतलब आता है खुशी, टिप, एपेक्स, ये टिप पे है ना, एपेक्स मतलब टिप, उसी को हम लोग बोलते हैं अपाइकल। डन सर। ओके, ठीक है। सो बेसिकली इट प्रमोट्स द अपाइकल डोमिनेंस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अपाइकल बर्ड, तो जब कभी भी प्लांट्स को ये अपाइकल बर्ड रहेगा, दैट टाइम द लैटरल बर्ड विल ऑलवेज बी रिसेसिव, मतलब उसका एक्टिविटी इनहिबिट हो जाता है। तो ये प्लांट कैसे ग्रो होगा, तो ये प्लांट सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में ग्रो होगा। Get in this? So in the presence of apical bird, the growth of the lateral bird is inhibited. यहाँ पे lateral bird का growth inhibit होता है, या तो पूरी तरह से रुक जाएगा या फिर कम होगा as compared to the vertical. मतलब this plant will grow more vertically rather than horizontally like this. ठीक है? So this is known as the apical dominance. राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सपोज इफ द रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड टेक्स प्लेस, सपोज अगर मैंने यहां से अपाइकल बर्ड निकाल ही दिया, व्हेन आई रिमूव द अपाइकल बर्ड, नेचुरली द लैटरल बर्ड्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। तो मुझे अगर किसी भी प्लांट का हाइट मुझे कम रखना है, कोई प्लांट में ग्रो कर रहा हूं मेरे फार्म में, और वहां पे मुझे प्लांट का हाइट कम रखना है, और उसका जो गर्थ है या फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल रिमूव द अपाइकल बर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट। वी कॉल दिस मैकेनिज्म एज प्रूनिंग, आर्ट ऑफ प्रूनिंग ऐसा बोलते हैं उसको। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, द एक्टिव अपाइकल बर्ड हियर विल बी रिमूव्ड, and when the apical bud is present, the lateral buds will not develop. तो मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा। The moment I remove this apical bud, the lateral growth will continue. समझ में आ रहा है? And as the plant is laterally growing, तो प्लांट का हाइट लिमिटेड रहता है, कंट्रोल में रहेगा, सिर्फ वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बढ़ते रहेगा। As I said, this entire mechanism is known as the pruning mechanism, art of pruning उसको बोलते हैं। Okay, so removal of the apical bud will eventually develop the lateral buds. So now if this apex is exposed to the auxin block, जहां से मैंने apical bud को निकाल दिया है, निकालने के बाद अगर मैंने इसको ऑक्सिन ब्लॉक के साथ एक्सपोज कर दिया, देन द लैटरल बर्ड विल स्टार्ट बिकमिंग डॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन ब्लॉक से ये एपेक्स पे क्या रिलीज हो गया, ऑक्सिन। सो ऑक्सिन, एक्सेस ऑक्सिन इन द अपाइकल बर्ड हैज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड्स। तो अपने आप लैटरल बर्ड रुक जाएगा। मतलब ये पूरा अपाइकल डोमिनेंस जो है वो कौन कर रहा है, दिस अपाइकल डोमिनेंस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। सो ऑक्सिन इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स। ठीक है, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ अपाइकल बर्ड एंड इट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बर्ड्स। ये रोक देता है लैटरल बर्ड्स को। So why do lateral birds remain dormant in the presence of auxin? So lateral birds, they require less concentration of auxins for the growth. Okay, more concentration of auxin will always inhibit their growth, यानी उल्टा इफेक्ट आएगा। Get in this? तो इसके लिए lateral bird जो है वो बन जाता है recessive, मतलब वो inactive हो जाता है। Get in this? Because ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन जैसा लैटरल बर्ड्स में बढ़ेगा वैसा उसमें इनहिबिशन आना चालू हो जाएगा। So this is how you can see the important concept of pruning, meaning apical dominance. I hope everyone is getting this. ये experiment किया हमने to understand कि how apical dominance is important. Is it clear? ये लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? कहां से लिखना है? ये वाला? और दिस वन?
Done. Finished. हो गया. Done. Done. हाँ हाँ हो गया. चल गुड. Finished. No, sir. Finished. Yes, sir. Done. वो मत लिखो, वापस लिखना पड़ेगा आपको. ये लिखे रखो. Auxin inhibits the development of lateral buds. इतना लिखो पहले सेंटेंस, एक ही सेंटेंस. क्वेश्चन आता है why. Okay, so the reason is this. Done. Yes, sir. गुड. तो ये हो गया अपाइकल डोमिनेंस. और अपाइकल बर्ड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग, जो मैंने अभी बताया आपको. दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ प्रूनिंग. आर्ट ऑफ प्रूनिंग मतलब क्या? दिस
फार्मर इज रिमूविंग द अपाइकल बड, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही होगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, लिमिटेड ग्रोथ विल बी सीन, सो दैट्स कॉल्ड एज प्रूनिंग. प्रूनिंग इज नथिंग बट removal of apical buds. ठीक है, so that's called as the pruning. ये भी करते हैं. Now auxins are used in hedge making in the tea plantation. ठीक है, hedge making मतलब क्या? टेक्निक which involves removal of the apical bud, right? तो अगर आप टी प्लांटेशन भी देखते हो ना तो वो प्लांट एकदम छोटे होते हैं, करेक्ट, और उनका हाइट ज्यादा बढ़ता नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे विल रिमूव दिस पर्टिकुलर अपाइकल बड फ्रॉम देम सो दैट दे विल ग्रो लैटरली पैरेलल टू द सॉइल रादर देन ग्रोइंग विद द हाइट. तो उनका हाइट कम बढ़ता है और उनका जो ओवरऑल ग्रोथ रहता है इट इज मोर पैरेलल टुवर्ड्स द सॉइल, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा रहता है. सो दिस इज नोन एज हेज मेकिंग. So basically it promotes the apical dominance and it inhibits or stops the inhibits the lateral budding, lateral dominance. Okay, lateral dominance को रोकता है, apical dominance को, apical growth को, apical bud के growth को बढ़ाता है. So that is how it is being used for the opposite purpose. Next, it is also useful for in the plants for shedding of the leaves. We call this as abscission. Falling of the leaves, falling of the fruit is known as abscission. So shedding of the leaves, fruits and flowers will fall from the plants. तो ये mechanism को हम लोग बोलते हैं, we call this as abscission. Okay, abscission is nothing but falling, that is detachment of the leaves, flowers and fruit from the plant body. So for that also auxin will be useful. But abscission का primary function किसका है? Abscission is a primary function of abscisic acid. जो लास्ट वाला हार्मोन जो आपने लिखा है वो, सो ये उसका फंक्शन है. सो abscission is a secondary function of the auxin. Okay, primarily it is responsible for cell elongation and then cell division, and फिर बाकी के फिर ये चीजें आती है. Okay, ठीक है. So how does abscission occurs? अभी ये प्रोसेस कैसे होता है ये लिखा गया, Nice. लिखो लिखो. डन. ओके, अभी एब्सेशन कैसे होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. नाउ इफ यू सी हियर एट द नियर द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड है, तो यहाँ पे ना समवेयर हियर इन दिस रीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ एब्सेशन लेयर व्हिच टेक्स प्लेस एट द बेस ऑफ द पेटियोल. पेटियोल मतलब क्या? ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो रीजन होता है ना लीफ का, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल. तो इसी को मैंने मैग्नीफाई किया तो पता चलता है कि ये पेटियोल है, एंड यहाँ पे पेटियोल में ही जस्ट नियर द एक्सिलरी बर्ड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द abscission layer, and here in this region the amount of abscisic acid will be, amount of auxins will be more. So the action of hydrolytic enzymes here causes abscission. When I say hydrolytic enzyme मतलब क्या? The one which helps in destruction of the cells. Okay, तो यहाँ का टिश्यू, यहाँ के सेल्स डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे, and then naturally they will get separated from the actual plant body. So this is also done by the auxins. Okay, so formation of abscission layer will take place at the base of the petiole, and because of action of hydrolytic enzymes the abscission will be caused. समझ में आ रहा है? So concentration of abscisic acid, concentration of auxin in this region will be more, और जितना ज्यादा वो होगा उतना chances of falling of leaf or plant. ठीक है? Then next is auxin prevents the abscission when the plant is young. Okay, so auxin will prevent the action of hydrolytic enzyme formed at the abscission layer. This is done at the time when it is young. So in young leaves and fruits, auxins will help in preventing the abscission. उल्टा काम करता है. Whereas
प्रोमोट करता है कब? व्हेन इट इज इन द लेटर स्टेजेस, ओल्ड स्टेजेस. मतलब when the plant or the leaves they become old, fruits they become old, then the abscission will be promoted. Correct? So young age may be when the plant is young, at that time also we have the abscisic acid, but still it doesn't promote the abscission. It is only because auxin is preventing it. So auxin will prevent abscission in the young leaves and the fruits, but auxin will promote abscission in case of older leaves and fruits. ठीक है? So that's the function of auxin. समझ में आया सबको? लिख रहे हैं ना तुम लोग सब पैरेलली कि पीछे जाना पड़ेगा मुझे? ये वाला finished? Yes, sir. ये भी लिख के रखो. Auxins will prevent abscission in the young leaves and fruits, and it promotes abscission in the older leaves and fruits. Done? Okay. Now, how are fruits normally formed? Fruit कैसे बनता है? तो यहाँ पे as we all know that the sexual reproduction will take place in the flowers. When the sexual reproduction takes place, it gives rise to a process cell called as the zygote. Zygote now starts developing into an embryo. जब embryo बनना चालू हो जाता है, then these petals, these sepals, they will start falling off. Shedding of all these structures will take place, so that now the seed develops from the ovule, and the ovary develops into the fruit. So the fruit develops from the ovary, so that we will see that the seed is present inside the fruit. तो ये जो प्लांट का ओवरी होता है उससे बनता है फ्रूट. ओके. और प्लांट के स्ट्रक्चर में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल विल डेवलप इनटू अ सीड. गेट इन दिस? ओवरी का डायग्राम आपको पता रहेगा, समथिंग लाइक दिस, फ्लास्क शेप्ड होता है ना. इसके अंदर ऐसा एक ओव्यूल रहता है. ये ओव्यूल के अंदर एक सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अलग अलग सेल्स होते हैं. सो दिस इनर मास दैट इज ओव्यूल विल डेवलप इनटू अ सीड, और ये बाहर का जो पोर्शन होता है दैट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ सीड, इनटू अ फ्रूट. तो उसका फ्रूट बनना चालू हो जाएगा. So this is how the fruit will be formed. अभी यहाँ पे क्या होता है? What happens here in this case is the after fertilization the flower forms the fruit and the seeds. ठीक है? So that the fertilized ovule will develop into a seed and the mature ovary will develop into a fruit. Okay? Mature ovary का fruit बनना चालू हो जाएगा. Now, what if the fruits are formed from unfertilized flower? अगर unfertilized flower से fruit बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं parthenocarpy. Okay, so it is known as the parthenocarpy, meaning production of the fruit without the fertilization. राइट, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी. एंड दीज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी द सीडलेस वन. तो इसमें आपको सीड नहीं मिलेगा. सो दे आर ऑल सीडलेस. ओके. अब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनता है? सो बेसिकली इट देयर इज अ रोल ऑफ ऑक्सिन इन दिस. सो पार्थेनोकार्पिक फूड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स लाइक NAA और IBA. ओके. ठीक है. जैसे टोमेटो फ्लावर से नो देयर इज नो पॉलिनेशन, इट विल फॉलो
again no pollination, but auxins are applied, so it develops into the fruit. तो इसका fruit बनना चालू हो जाएगा. So auxins will help or promote the parthenocarpy. Okay, ठीक है. So this is another important concept or the mechanism which we have. समझ में आया सबको? हेलो, हाँ हाँ, लास्ट स्लाइड ये वाला. Finished? अच्छा, NaA here is naphthalene acetic acid. Huh? It is called as naphthalene acetic acid. Last slide, sir. कौन सा last slide? ये लोहिता. Yes, so the seedless tomato will be produced because of this. Correct, Aditya. So parthenocarpy is a mechanism by which seedless varieties are produced. Even banana is also produced by the same mechanism. एक मिनट ना, ये लिखो तब तक, just give me a minute. Okay, shall we? ये हो गया लिख के? Done? Yes, sir. Aditya. Papaya is also same. Banana is also same example. You can take parthenocarpic fruits. Okay, next. 2,4-D is a variety, or rather you can say the alkaloid or the extract of the auxin, which is used as weedicide for dicot weeds. Weedicide का मतलब क्या होता है? The one which kills the weeds. So weeds are basically the unwanted growths of the crops which are seen in our main farms. So वहां पे इनका growth होता है. So there it will act as a weedicide. It is naturally present in those particular plants. So no damage to monocot crops will be there. ठीक है, तो आप क्या करोगे? वी विल स्टार्ट स्प्रेइंग दिस ऑन द प्लांट, यानी जहां पे भी हम लोगों ने प्लांट्स डेवलप किए हैं और सपोज वहां पे कोई अगर डाइकॉट वीड्स डेवलप होना चालू हुए, सो यू कैन स्प्रे दी दिस पर्टिकुलर ऑक्सिन दैट इज 2,4-D. तो इसको आप स्प्रे कर सकते हो. स्प्रे करने के बाद इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मोनोकॉट क्रॉप्स, बट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द dicot weeds, so it kills the weeds, तो ये weeds को खत्म कर देता है. So auxins will definitely act like a weedicide, especially in the dicot weeds.
ओके, तो इतना एक लास्ट पॉइंट है, ये लिख लो सो दैट आवर ऑक्सिन्स विल बी डन. फटाफट लिखो. Finished? Okay, so overall, if we have to summarize the functions of the auxin, तो सबसे पहला आएगा promote the cell division and cell elongation. Second one is formation of the callus in the tissue culture. Third one is formation of adventitious roots in cutting. Fourth one is root initiation in tissue culture. Fifth one is apical dominance, which is caused by auxins. Then it also prevents abscission in young fruits and leaves and promotes abscission in old fruits and leaves. ठीक है, तो ये important functions आते हैं. Plus it helps in formation of the parthenocarpic fruits. Then 2,4-D is used as a weedicide for the dicot weeds. Right? So these are all the different functions of or applications of the auxins. Okay? ठीक है, तो इसको एनलिस्ट करके रखो सिर्फ. ठीक है ना, बाळा तुझं नाव आणि हे लिह डिटेल्स. लिह ना. डन. ते राहू दे, ते टेम्परेचर ने ते चेक करायचं. राहू दे. सेंटर तिथे लिह ना, JC 10 CBSE लिह ना तिथे. ठीक है, फिनिश्ड. Yes, sir. ओके, चलो तो ये हो गया हमारा ऑक्सिन्स खत्म. गिबरलिंस चालू करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में? हेलो, नेक्स्ट हार्मोन चालू करना है क्या? नहीं ना, चलो 5 ही मिनट बचे. सो विल स्टार्ट नेक्स्ट हार्मोन इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी आप लोगों को फिर से 4:30 बजे आना है. 4:30 we again have a lecture, so please join. Yes, okay, chalo, bye bye, thank you. Thank you, sir. Yes, Bye, bye bye. sir. Bye bye. Bye sir, thank you sir. हाँ 4:30 आ जाओ वापस. एक्सक्रीटरी सिस्टम. Bye. Yes, bye bye.